Good morning, students. How are you? I hope you enjoyed the holidays. Now, welcome back to General Knowledge class. Today, our topic is environment around. Given below the abbreviations related to the environment, write the full form. What is the full form of AAQ? Advanced Air Quality. ACF, Activated Carbon Filter. BOH, Board of Health. Full form of CFC, Chlorofluorocarbon. What is the full form of DAD, Dead and Decomposing? What is the full form of HAP, hazardous air pollutant? What is the full form of IRAP, immediate response action plan? QA, क्वालिटी एश्योरेंस. बच्चों, इसके अलावा भी आप अपनी एब्रीवेशंस और भी कर सकते हो, जैसे नासा की ISRO. तो आपने और भी एब्रीवेशन रिवाइज कर लेना. स्टेप्स टू फेम. Given below are the brief descriptions taken from the great works of same famous scientist. Read them carefully. ये बच्चों सारे साइंटिस्ट हैं जिनका नेम फेम है और उन्होंने बहुत ग्रेट वर्क्स किए हैं साइंस से रिलेटेड. He was the first to produce the electricity by hanging a dead frog on the iron railings with the copper hooks. Galvani. Second is, he was inspired by a swinging church lamp which led to the invention of pendulum clock. Galileo. He accidentally spilled some rubber, sulfur and lead into the stove, resulting in rubber resistant to heat and cold. Charles Goodyear. He made greatest discovery by growing peas, formulated the laws of heredity, passing the characters from one generation to another. Hereditary means passing the characters from one generation to another. Mendel. He was a famous discovery while being in his bath and gave the famous principle, Archimedes principle. He, while trying to make the refrigerator, accidentally invented Teflon that is used in non-stick utensils. Roy Plunkett. आजकल नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का यूज़ कर रही है ना, ये किसने इन्वेंट किया था? रॉय प्लंकेट. ही मेड अ डिस्कवरी आफ्टर लर्निंग अबाउट नाइट राइटिंग विच प्रूव टू दी boon to the blind. Louis Braille. He accidentally discovered sweetener when he forgot to wash his hands before lunch after working in Johns Hopkins lab. Constantine Folberg. He observed the blacksmith at work and came out with the musical scale using different sized hammers. Pythagoras. He was a Navy radar specialist who felt that chocolate bar in his pocket starting melting in front of microwave emitters, and this led to the invention of microwave. पेंसी स्पेंसर. ये जितने भी हैं ये सारे साइंटिस्ट हैं जिनसे इन्होंने डिस्कवरी कभी
की है और ये इनका अब नेम फेम है। नाइट राइटिंग, it is a method of sending secret messages by punching dot marks on the thick papers which can be read by people in dark with fingertips. गैजेट्स के बारे में इसमें बताया गया ये गैजेट्स किसने डिस्कवर किए हैं। मैनी साइंटिफिक डिवाइसेस एंड गैजेट्स हैव बीन इन्वेंटेड विच हेल्प अस टू मेक द प्रॉपर मेजरमेंट, रीड द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अनस्क्रैम्बल द लेटर्स हैं और फाइंड आउट सम गैजेट्स, और सभी गैजेट्स एंड विद द मीटर। इट इज़ यूज्ड फॉर measuring long distances accurately, geodemeter. It is used for measuring long distances accurately, geodemeter. It is used for measuring electric current, ammeter. It is used for measuring electric current, ammeter. It is used for measuring the atmospheric pressure, barometer. It is used for the atmospheric pressure is barometer. It is used for measuring small amount of electric current, that is galvanometer. What is the use of galvanometer? It is used for measuring small amount of electric current. It is used to measure the amount of water vapor in the air, hygrometer. Hygrometer is used to measure the amount of water vapor in the air. What is the use of barometer? It is used for measuring atmospheric pressure. It is used to detect presence of impurities in milk. Lactometer. Lactometer means to detect the presence of impurities in the milk. It is used for measuring magnitude and direction of a magnetic field, magnetometer. It is used to measure the wind speed, anemometer. Anemometer is used to measure the wind speed. It is used to find the radius of sphere and find the exact measurement of thickness of small bodies, spherometer. Spherometer is to find the radius of the sphere and find the exact measurement of thickness of the small bodies. It is an instrument which is used for measuring small distances or dimensions. Micrometer. Do you know the instrument used for measuring BP, blood pressure is called sphygmomanometer. अब बच्चों एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड बर्ड्स कौन से हैं, इसका आपको ये जो पिक्चर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नेम लिखना है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, नेम सम एंडेंजर्ड बर्ड्स। फर्स्ट इज बंगाल फ्लोरिकन, सेकेंड इज लॉन्ग बिल्ड वल्चर, हिमालयन क्वेल, ओरिएंटल स्ट्रॉक, फॉरेस्ट आउलेट, सौर क्रेन। अब बच्चों आपने जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राइट फ्यू एंडेंजर्ड बर्ड्स, बंगाल फ्लोरिकन, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, हिमालयन क्वेल, ओरिएंटल स्टॉक, फॉरेस्ट आउलेट, सौर क्रेन। ये आपने पेज नंबर 17 से 20 आपने अपनी बुक में नोट भी करने हैं और साथ साथ रिवाइज भी कर लेना और लर्न भी कर लेना। नेक्स्ट वीक आपका लिटरेचर का टेस्ट लेंगे, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।